हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक स्प्रिंग बैलेंस ए है जो कि 2 केजी रीड करता है, जबकि उससे एक ब्लॉक एम मास का सस्पेंडेड है। ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस बी है जो कि 5 केजी रीड करता है, जब उस पर एक बीकर जिसमें लिक्विड है वो रखा जाता है। ठीक है। द टू बैलेंसेस आर नाउ अरेंज्ड सो दैट हैंगिंग मास इज इन इनसाइड द लिक्विड इन द बीकर एज सोन इन फिगर। ठीक है। अब इनको कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 केजी। इस तरह से 4 पार्ट दिए गए। तो बैलेंस ए अब क्या होगी इसकी। तो गाइस हमने क्या किया है कि जो अपने पहले सेपरेटली थे, मींस ये अपना बैलेंस ए था। ठीक है। ये अपना क्या था, बैलेंस ए था जिसपे एक मास एम था। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसकी रीडिंग थी वो कितनी होगी, मतलब जो इसकी रीडिंग थी वो कितनी थी, 2 केजी थी। मीन्स जो इसका वेट होगा वही तो इसकी रीडिंग होगी। मीन्स इसके वेट के इक्वल इसकी रीडिंग थी 2 केजी। अब इसको हमने एक लिक्विड में डाल दिया, मीन्स एक बीकर की में डाल दिया है। तो हमें पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर या फिर किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो उस मतलब जितना वेट वो वाटर का डिस्प्लेस करता है उसके इक्वल उस पर एक क्या लगता है, वायुएंट फोर्स लगता है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या लगता है, वायुएंट फोर्स लगता है। मीन्स जब हमने इसको लिक्विड में डाला होगा, मीन्स बीकर में डाला होगा जिसमें अपना लिक्विड फिल है, तो अपना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसके वेट के इक्वल इसमें क्या लग रहा होगा, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट पर लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बैलेंस ए की रीडिंग मीन्स अब इसमें एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा एफ बी। ठीक है। तो अब ये कितना रीड करेगी, पहले कितना कर रही थी 2 केजी, अब ये कितना करेगी 2 माइनस एफ बी। ठीक है। वेट के टर्म में लिख लें तो यहाँ पे जी पुट कर देते हैं। तो इनिशियली 2G था, अब कितना हो जाएगा 2G माइनस एफ बी, जो कि क्या होगा 2 केजी से लेस होगा। तो बैलेंस ए अब कैसे रीड करेगी, लेस देन 2 केजी रीड करेगी। ठीक है। अब बैलेंस बी का देख लेते हैं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट पर अपना वायुएंट फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है तो बीकर में जो लिक्विड है उस पर वायुएंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, लिक्विड उसका डिस्प्लेस हुआ है बीकर का, तो इसमें जो वायुएंट फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना, सेम एफ बी। तो अब जो बैलेंस बी है अपना वो कितना रीड करेगी, पहले कितना रीड कर रही थी 5 केजी रीड कर रही थी और 5G रीड कर रही थी, अब कितना रीड करेगी एफ बी प्लस 5G। मीन्स अब इसका जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मोर देन 5 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है। बैलेंस बी की 5 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो बैलेंस बी है वो 5 किलोग्राम से मोर देन रीड करेगा। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 केजी एंड बी विल रीड मोर देन 5 केजी। तो पार्ट बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। थैंक यू। Hello students, today our question is a block of ice with a lid shot embedded in it floating on water contained in vessel. The temperature of the system is maintained at 0 degree Celsius as the ice melt. When the ice melt completely to the level of the water in the vessel rises. So we have to find this is true or false here. So the solution of this question is according to, we can apply here Archimedes principle here. So we can write here according to Archimedes principle, if any object is floating on a liquid, the weight of the liquid displaced is equal to the weight of the object. So weight of the object must be equals to the weight of liquid displaced. So when the block of ice melt, the bullet ultimately sink in the water and displace the same volume of water its own. So but when it is embedded in, so we can write here, but when it is embedded in ice, it displace move its it displaced move volume, therefore water of the level fall here. So the water of level fall here. So we have given, but it is in the question, it is given to us, it is vessel rises. So this is false statement given us. So this is false, and we have given the reason for it. Thank you. The question is given a barometer made of very narrow tube, see in figure, as placed at normal temperature and pressure. So the coefficient of volume expansion of mercury is 0.018 per degree Celsius and that of tube is negligible. So the temperature of mercury in a barometer is now raised by 1 degree Celsius. Means mercury in the barometer is raised by 1 degree Celsius. So what temperature atmosphere
the temperature of atmosphere does not raised by 1 degree Celsius. So, but the temperature of atmosphere does not change. So then the mercury height in the tube remain unchanged. So here we have to find the when it raised. So here the temperature atmosphere does not change and mercury height is remain unchanged. We have to see this is a false here true. Now here firstly consider here pressure P1 and here pressure P2. So here we can write pressure of P1 is equal to P2. That means is equal to 1 atm. Now here we can write here this is a H rho G. So now here on changing temperature we can write this is the on changing here means on changing temperature. G will not change and atmosphere pressure will not change. So that means a constant. So here we can write on changing the temperature. G will not change here. G will not change and here we can write and atmosphere also not change here. Atmosphere pressure means the atmosphere pressure will not change. So that means is equal to H into rho is a constant and G is also constant. So now here when temperature is when now as with rising temperature. So density of mercury when a temperature rises, so this Hg is decreases and here that means H increases. So here we can write like this means when temperature is increase. So here density of Hg is decrease. So height here H height of mercury column will increase here. That means H increase. So here hence the given statement is false. This means this is a false. This is solution to this question, guys. Thank you. Hello. We are given with a question, and the question says that a uniform solid cylinder of density this much floats in an equilibrium combination of two non-mixing liquids A and B. The densities of A and B are this and this. Height is HA and HB is this. Find the total force exerted by liquid A on cylinder. Find H, the length of the part of the cylinder in air. The cylinder is depressed in such a way that its top is just below the upper surface of liquid A. Is then released. Find the acceleration of the cylinder immediately after it is released. So first of all, for A, when we see that the A is, it is a cylinder, right? It is in a curved form here, right? This is the curved surface. So the liquid A is applying pressure from all directions, right? So since it is applying pressure in all directions, net pressure or force would be equal to 0. So the net force would be equal to 0. Now next is find H. We have to find H. Since buoyancy force would be equal to the weight applied, right? So area into HA into rho AG plus area into HB into rho BG would be equal to weight, that is H plus HA plus HB into area, right, into rho CG. So now as we can see this is given, right? So we can cancel A on both sides, G on both sides, right? So we are left with HA and rho A, which are given as, so what would be H? This is HA rho A plus HB rho B equals to H plus HA plus HB into rho C, right? So now what we will do is we will take this H on this side and everything else on the other side. So that would be equal to HA rho A plus HB rho B upon rho C minus HA minus HB. This is the equation we got. So when we substitute all the values, that is 1.2 into 0.7 plus
0.8 into 1.2 upon 0.8 minus 1.2 minus 0.8. So what we get is equal to 0.25 centimeters, right? So now when we this is the h, right? So the next question we are given with is c, that is we have to find the acceleration after when it is fully submerged in liquid A, right? The surface touches it. So A acceleration would be Fb minus mg upon m, capital M, right? So from here we can say that Fb would be equal to HA rho A plus rho B into H plus HB, right? Why H plus HB? Because H is inserted in this, right? This is the already height HA, but H plus HB would be inside this, right? So this would be this minus H in H plus HA plus HB into rho C, this into G, right? This is the total numerator upon denominator, that is rho C into H plus HB plus HA. This is the denominator. So when we substitute all the values, A turns out to be G by 6 meter per second square in upward directions. So this is the answer. Thank you. Hello everyone, my name is Remanshu Nagaj and here we are with another question. Question says a wooden stick of length L, radius R, it must be in form of cylinder, and density rho has a small metal piece of mass m, negligible volume, don't take this volume, just take mass, attached to it one end. Find the minimum value of small m in terms of given parameter that would make stick float vertically in equilibrium in a liquid of density rho, and it is given as rho is greater than small rho. Sigma is liquid of density sigma. Sigma is given as greater. So we know that if it is greater, which means liquid will not be in equilibrium, it will float partially submerged, but this mass will help it to keep it will help it to keep it down. So whenever such type of flotation question occurs, if you want any object to float, if you want any object to float, it would definitely means that gravitational mass, yeah, or you can say weight, is equals to buoyant gravitational. We should actually call it weight. Why? Because we are comparing with the buoyant force. A gravitational weight also means a gravitational mass also means a weight, so it's okay. Weight, the complete weight of what stick and mass is equals to buoyant force. So we'll add both small mass mg its weight, and for stick rho vg is equals to buoyant force sigma vg. Now v volume is equals to pi r square l, putting the value of pi r square l. G is cancelled out everywhere, this will go here, so we get m is equals to sigma minus rho v means pi r square l. Thank you. Hello everyone. So today we're going to solve this question. The question says a wooden plank of length 1 meter and uniform cross section hinged at one end of the bottom of a tank as shown in the figure. The tank is filled with water up to a height 0.5 meter. Okay, so this is basically what 0.5 meter. Now the specific gravity of the plank is 0.5. So what is specific gravity? So specific gravity is basically, you can say, the density of the wood that or the plank, okay, divided by the density of the water. So that is given as 0.5. So we have to find the angle theta that the plank makes with the vertical in the equilibrium position.
So let us say that this is its equilibrium position. So we have to find this theta, okay, at this equilibrium position. So now, as I told you, that the specific gravity is what? So specific gravity is equals to 0.5, that is equals to density of Planck divided by the density of water. So we can say from here that density of Planck is equals to 0.5 of density of water. We will use it for, okay, later. So now, you know that here they have given us the length 1 meter. This whole length is 1 meter. Okay, now let us consider that after this point, the length is x. So for this length, for this portion, the length will be equals to L minus x. Okay. So now, you know that the forces that will be acting here, if you see, the forces that are acting here, that at this point, mg will be acting in the downward direction. Okay. And at the distance that is half of this, there will be an at Lx by 2, some F buoyant force will be acting. Okay. At length L minus x by 2. Okay. And the mg is acting on the at the center of mass. So now you know that for equilibrium, what are the conditions for equilibrium? You know that the net torque should be equals to 0 or net force should be equals to 0. So let us consider the torque at this point O. So at point O, the net torque is 0. So let us write the torque. So you know the torque is what? So the torque is basically force into the R perpendicular. So here if you see the R perpendicular of this, it will be equals to, this will be this, and if this angle is theta, then this angle will be 90 minus theta. So here projection will be mg minus mg sine theta. Okay. So now for that we can write here the forces will be mg L by 2 sine theta minus the buoyant force that is acting in the upper direction at distance L minus x by 2 into sine theta, because we have to take the perpendicular component, that is the R perpendicular. Okay. So from here we can write sine theta will get cancelled with sine theta, so we'll be left with mg L by 2 minus fb L minus x by 2 is equals to 0. Now we can write mass here equals to what? The density rho of the Planck into the volume. So what is volume? Volume is area into length. Length is we know that is 1. Okay. So let's replace this mass here. So we'll get here A into 1 into rho p into g into half L by 2. So we'll replace L, the value of L, that is 1. So that will be equals to, what is F buoyant? You know that F buoyant is given by the density of water into the area into L minus x to the distance with which to which it is acting. So it will be equals to what? Density of water into area into L minus x into L minus x by 2. Okay. So now from here you know that you can write the rho p. We have seen there that it is equals to 0.5 into density of water, so into 1 by 2 into rho w into A into L minus x into L minus x divided by 2. So let's place L is equals to 1, so let it be 1 only. Okay. So now from here we will get, so A will get cancelled with A, this row will get cancelled with this row. So here we'll be left with 1 by 2 into 1 by 2 is equals to 1 minus x whole square divided by 2. Or from here we will get 1 minus x
is equals to what? 1 by under root 2. Okay, so this is our value of 1 minus x. Now, if we have to find the cos theta, what does cos theta have? So cos theta is basically what? Base into hypotenuse. So here you can see the base is our height, that is h, okay, and that is given us 0.5 meter. So it will be this h, okay, divided by what? 1 minus x, this h over this. So it will be equals to, so cos theta is equals to h by L minus x, or it will be 1 minus x, equals to the value of h is 1 by 2 into the value of 1 minus x is 1 by root 2. So from here we will get 1 by root 2. So cos theta is 1 by root 2. From here we will get theta is equals to what? Cos inverse 1 by root 2. And you know that for the value 1 by root 2, theta is 45. So here we get theta is equals to 45 degree. So this is our answer that we have to calculate. So I hope you understood it. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मरकरी कॉलम है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके, और इस कंटेन इन द मिडिल ऑफ अ नैरो हॉरिजॉन्टल 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब। कह रहा है कि ये किसी नैरो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, उसके मिडिल में रखा गया है, ओके, जो कि दोनों साइड से क्या है, क्लोज्ड है। बोथ द हाल्व्स ऑफ द ट्यूब्स कंटेन एयर, जो दोनों हाल्व्स है ट्यूब के, उन दोनों में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, ओके। उसने बोल रखा है कि यहाँ पे क्या है, एयर है ट्यूब्स में। प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। करे बाई व्हाट डिस्टेंस द कॉलम ऑफ मरकरी बी डिस्प्लेस्ड इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली। अगर हम ट्यूब को वर्टिकली कर दें तो जो कॉलम है वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मतलब जो कॉलम है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मरकरी कॉलम हो गया, ठीक है। तो जब ये हमारा मतलब मिडिल पॉइंट में रखा जाएगा तो एयर ऊपर से प्रेशर लगाएगी P1, नीचे वाली एयर लगाएगी P2, और इसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इसको मिडिल पार्ट में रख रहे हैं तो पहले इनिशियल कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कॉलम होगी, एयर कॉलम होगी, जिसके मिडिल में ये क्या किया गया है, रखा गया है, ओके। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट को हम मिडिल पॉइंट को दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ ये मिडिल पॉइंट हो गया, और m, इसको मैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिडिल पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा कॉलम है, ओके। तो अगर ये मिडिल पे रखा होगा तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो बची हुई ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होगी, 45 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, 45 सेंटीमीटर, ओके। अब ये मत कहिएगा यहाँ की कि 45 सेंटीमीटर बहुत छोटा लग रहा है, ये हम एग्जामिशन के लिए कर रहे हैं, ओके। ये नहीं कि मतलब लेंथ यहाँ पे हमें कोई वो नहीं करना है, तो फिगर है भाई छोटा बन जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं अब कि अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ, इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो x डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम हो गया, और अब उसमें क्या हो रहा है कि x डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, ठीक है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये उस पोजीशन से यहाँ पे आ जा रहा है, ओके, ये और ये हमारा मिडिल पॉइंट वहीं पे है, ठीक है, ये हमारा m है। अब ये हो गया A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P डैश मान लेते हैं, ये हमारा P डैश पॉइंट है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, x डिस्टेंस हो गई, ये Q डैश हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो m इज मिडिल ऑफ द ट्यूब, तो जब m हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट में है, तो जब मिडिल पॉइंट में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम, जब वो मिडिल पे है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन ट्यूब इज एट मिडिल, जब ट्यूब क्या है, मिडिल में है, तो फोर्सेस को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर नंबर 1 है, इसे हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 इंटू एरिया A1 हो गई उसकी, प्लस mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये किसके इक्वल होंगे, P2 इंटू A, इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 इंटू एरिया प्लस मास उसका कितना दे रखा है, मास नहीं दिया हुआ, लेंथ उसकी दे रखी है। ओके, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू एरिया, या वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी डी ऑफ एच जी इंटू जी। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, P2 इंटू ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ए हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तो हमारे पास P1 प्लस 10 डी जी डी एच जी इंटू जी इक्वल्स टू P2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। अब जब डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जा रहा है, तो उस केस को भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एयर कॉलम AP में प्रेजेंट होगी तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, इनिशियल उसने एयर प्रेशर दे रखा है हमारे पास कि जो एयर में, कंटेनर में एयर प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास P है दोनों साइड। P की वैल्यू कितना दे रखा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी, सॉरी फोर्सेस जो होंगे उनको पहले बैलेंस करते हैं। तो P1 इंटू ए, ओके, हमने माना कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे P1 प्रेशर लग रहा है और यहाँ क्या लग रहा है, P2 लग रहा है। ओके, तो P1 इंटू ए, ओके, इंटू 45, ये इनिशियल कंडीशन हो गई, इज इक्वल्स टू P1, सॉरी इनिशियल कंडीशन में तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इनिशियल कंडीशन ये हमारे पास, इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P है, एरिया कितना है, A है, और डिस्टेंस कितनी, हाइट कितनी है, 45 है। ओके, ये वैल्यू आफ्टर क्या हो जा रहा है, हमारा प्रेशर P1 हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 45 प्लस x हो जा रहा है इंटू A, ये वैल्यू हो जा रही है। तो अगर यहाँ से हम P1 कैलकुलेट करें तो P1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, P1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45 अपॉन 45 प्लस x, और साथ ही में क्या आएगा, P आएगा। P की वैल्यू क्या है, तो P हमारा प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। तो रो किसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी डी एच जी इंटू उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 76 इंटू जी, ये वैल्यू हो गई हमारी P की। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इसको 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली क्या फाइंड करते हैं, P2 फाइंड करते हैं। तो P2 फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 45 अपॉन 45 माइनस एक्स, यहाँ डी एच जी इंटू 76 इंटू जी, ये वैल्यू आएगी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें P1 और P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ P1 और P2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 45 इंटू 76 इंटू डी एच जी इंटू जी अपॉन यहाँ पे P1, ये कितना है, 45 प्लस x, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, प्लस अब यहाँ पे ये क्या था, 10 डी एच जी इंटू जी इक्वल्स टू P2, 45 अपॉन 45 प्लस एक्स डी एच जी इंटू 76 इंटू जी, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे आज, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो 45 इंटू 76 अपॉन ये क्या आ जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45 इंटू
76/45 माइनस एक्स, ये आएगा। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2.95 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कॉलम है मरकरी वो क्या होगा, 2.95 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके।